if I'm writing under root of x squared, we know that this value has to come as positive, means the last answer will be positive, and that will represent as mod x. But when we have to write down without this mod, and this must be positive, so if x greater than 0, so we will greater than equal to 0, so we will represent this by x only, and for x less than 0, we'll represent this by minus x, because ultimately it has to be positive. So if x is less than 0, so I guess everyone is clear with this. Then we have to write down minus of x. So if x is negative, so already I am given the minus sign there. So ultimately the answer, the last answer will be positive one. And this is always the positive one, means any value under root of x square is mod x, and mod x will be open in two different forms. For x greater than 0, we'll represent this as x. For x less than 0, we'll represent this with minus x. But ultimately, the answer is positive only. But if I'm saying x minus 1 mod, means I'm saying x minus 1 when x minus 1 greater than equal to 0, or x minus 1 less than 0, I'll represent x minus 1 with minus sign, or 1 minus x. So I can say this as x greater than equal to 1, we have to represent this as x minus 1. For x less than 1, we have to represent this as 1 minus x. Clear to everyone? Yes, sir. Please note down. Okay. This is for mod x, this is for this. Huh? Note it down. So now I'm writing few of the mods with x, the values of x. You have to say what you can write. X minus 3 mod, x less than equal to 3. X minus 6 mod, x greater than 6. X plus 1 mod, x greater than less than equal to minus 1. X plus 3 mod, x greater than equal to 10. X minus 6 mod, x greater than equal to 100. X minus 1 mod, x less than equal to 5. Only 6 questions. Do it fast. What will write without mod?
Very good. Fast, fast, fast. Do it fast. Very good. Very good. Done, everyone. You, without mod, you have to write what would be this one for x less than equal to 3. So if you are writing x less than 3, then this will be 3 minus x, right? Mod is a positive quantity. This always gives the magnitude. X less than equal to 3 means the value of x would be 2, 1, 0, -1, -2. And then we have to represent this mod of x minus 3 as 3 minus x. So we can put the values of x, and ultimately this will be the positive one. For x greater than 6, any value you are putting greater than 6, so it must be positive without mod, so this will be x minus 6. X less than equal to -1, so minus of x plus 1 will give you the positive answer. Only you have to think कि पूरे function के आगे you have to take a plus sign or minus sign. See, x plus 3 for any value x greater than equal to 10, so this will be x plus 3 only with plus sign. Any value 11, 12, 11.1, 11.2, any value you are putting, you are getting value as x minus this. For x greater than 100, obviously x minus 6. For x less than equal to 5, this is the tricky one. Why? Because we know that x lying between 1 to 5, it will be different. X greater than equal to, no, sorry, x less than 1, it will be different. When x is lying between 1 to 5, any value you are putting, so this will be as x minus 1. For x less than, this is minus of x minus 1, or you can write 1 minus x. How many of you got all 6 correct? Write down 6. If 5, then 5, then 4, then 4. जितने करेक्ट हुए वो नंबर लिख दो पहले. सर वो लास्ट वाले को वापस से बता दोगे? नहीं बताता ऐसे जब तक आप हैंड रेज नहीं करोगे. ऑलमोस्ट सभी के सही हैं, लेकिन दिक्कत एक ही जगह पर आई है. आई गेस क्वेश्चन नंबर 5, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या गिवन था मेरे पास? x minus 1 इज इन द मॉड, राइट? इसे हमें रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे. अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या x लेस देन 1 होगा. x greater than equal to 1 होगा तो we should write this as x minus 1. x less than 1 होगा 1 minus x minus 1, this will be 1 minus x. But now is it okay बेटा? Yes sir. Right? अब ये दो चीजें, लेकिन मेरे पास यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि x greater than 1 तो है लेकिन up to 5 है. क्या फर्क पड़ता है? x 1 से 5 में मुझे ये रिप्रेजेंट होना चाहिए. तो x lies between 1 to 5 में we have to represent this as x minus 1. And x less than 1 के लिए this is 1 minus x. Is it okay? Yes sir. कोई और कुछ पूछना चाहोगे? किसी को भी लग रहा है कहीं पर? मेरे पास आंसर आए यार कितने आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर आए. लोग मेरे को यहाँ अधिक दिख रहे हैं. कितने लोगों ने आंसर नहीं दिया है? जल्दी से आंसर दे लो भाई.
आर्या, विशेषा, धर्मिल। मैं फिर से एक बार दे रहा हूं, इस बार सब लोग केयरफुल और सबके पूरे सही होने चाहिए। एंड राइट डाउन आंसर। लास्ट क्वेश्चन था, उसी पर काम कर सकता हूं। नॉट रिक्वायर्ड मोर। ध्यान से। Do it fast. This time all 6. Very good. Fast, fast. Very good, Dharmil.
Very good. Let's start. चलो देखते हैं. First question, x less than equal to -2. This will be becoming 0 at 3. तो 3 के नीचे पे तो this will be -2 पर 3 minus x. इस पूरे के आगे माइनस साइन लगेगा. x greater than 2. तो like 2 to 6. This will be 6 minus x and 6 to infinity. Sorry. X minus 6. X less than 5. X minus 1 to 5. Right? X plus 1. X less than minus 1. Minus of x plus 1. X greater than -10. So -10 to -3, it will be minus of x plus 3, and x greater than equal to -3. This will be x plus 3. मतलब मेरे को केवल आगे में कोई भी वैल्यूज वहां के आप पुट करके देख लो, उसके आगे पॉजिटिव लगना है या नेगेटिव लगना है, दैट यू हैव टू चेक. 2 to 6 पे x minus 6, राइट, नेगेटिव दे देगा. तो मैंने आगे माइनस साइन लगा दिया, तो इसी को मैं लिख रहा हूँ 6 minus x. एंड 6 to infinity, आगे की वैल्यूज है x minus 6, राइट. माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक के लिए वैल्यू हो गई 1 minus x. 1 to 10 के लिए वैल्यू हो गई x minus 1. x की वैल्यू 1 से ऊपर जब भी रखूंगा तो वो पॉजिटिव आ रहा होगा, राइट, ओवरऑल. अब जल्दी अपना अपना नंबर लिख दो, किसके किसके कितने सही हैं. आदित्य, धर्मिल, कनक, आर्या, चिन्मय, उदय, शुभम, प्रतीन, प्रतिनव. कितने लोगों के अभी तक आ गए हैं? उसके अलावा आदित्य, इथन, जेबल, रानी, कनक, तनिष, वत्सल, व्याप्ति. जल्दी से मेरे को आंसर लिख के दें, कितने कितने सही हुए, गलत हुए, सही हुए, जो भी है रिपोर्ट इट फास्ट, डू इट फास्ट. वेरी गुड केवल, वेरी गुड यानी, वेरी गुड. क्या क्या दिक्कत हुआ, डिस्कस इट. म्यूट करो यानी अपने आप को. प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, जल्दी डिस्कस करो, आगे बढ़ना है हमें. और फर्स्ट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैंने थोड़ा मिस्टेक कर लिया था. x इक्वल टू 1 को भी मैं ले लिया था. और अब क्लियर है फर्स्ट वाला? यस सर. ठीक है, और कौन से में दिक्कत हुई? और फोर्थ वाले में. What was the problem in that? सर वो थोड़ा टाइम लग गया था, मेरे को बाद में आया, फिर समझ आया. Okay, but we have to all like now it's okay ना? यस You can सर. proceed further. हाँ यस आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है. Now I'm converting this into the question, right? Like x minus 1 is in the mod plus x minus 3 is in the mod is equal to 5. We have to solve this. So how to solve this? Now, there are two mods. One mod is in 1 and other mod is in 3, right? And we have to think here how to solve this. अच्छा, इसको ग्राफ से भी solve करते हैं. हाँ, जो next method मैं दिखाऊंगा वो graphical method होगा. पहले के लिए
अभी यहाँ पे, right? Yes. So first we have to make the number line, right? This mod will be changing at 1, this mod will be changing at 3. So mark this, right? So we have to solve in 3 different cases, right? We have to solve in 3 different cases, where the first case is x greater than equal to 3. Second case will be x lying between 1 to 3, and third case will be x less than 1. Right? All 3 cases. Case first, x greater than equal to 3. If x greater than 3, so we know that x minus 1 will be represented as x minus 1, and again x minus 3 is represented as this is equal to 5. So 2x is equal to 4, 9, or x is equal to 9 by 2, and 9 by 2 is a greater than the value greater than 3. So my one answer is x is equal to 9 by 2, right? Coming to the second one. In the second one, when x lying between 1 to 3, if x is lying between 1 to 3, so x minus 1 will be represented as x minus 1, and this will be represented as 3 minus x is equal to 5. In this case, both x will be cancelling out, and this is coming as 2 is equal to 5. This is not true, but इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि मे बी पॉसिबल यहाँ पर आ जाते 2 is equal to 2 या 5 is equal to 5. अगर ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता है 2 is equal to 2 and 5 is equal to 5, then we 100% we can say that in that case each and every value of x must satisfy. मतलब उस समय आंसर होता 1, 2, 3 each and every value. The third case x less than 1. X less than 1. So this will be 1 minus x, and 3 minus x is equal to 5. So this is 4 minus 2x is equal to 5. 2x is equal to 4 minus 5, that's minus 1. X is equal to minus half. And minus half is the value less than 1. That's always satisfying this one. So we are getting 2 values. One is minus half, and second is 9 by 2 using curly bracket, means 2 discrete values satisfying our given question. Do it fast. Not done, please. Want to ask anything? Please ask. This is the first method, right? First, we'll practice with this method. Aditya, are you there? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बेटा? हाँ सर. कहीं पर समझाऊं मैं फिर से? सर बस ये पूछना था कि मॉड का रिजल्टेंट 0 हो सकता है ना? तो नहीं हो सकता. x की वैल्यू ही मान लो मॉड x माइनस 1 है, x की वैल्यू 1 ले लिया तो 0 हो जाएगा. हाँ, क्योंकि 0 पॉजिटिव में भी नहीं आता. 0 का कोई साइन होता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से रहेगा ना. ओके. व्याप्ति able to hear me? आवाज आ रही है मेरी? Okay, want to ask anything? क्लियर है पूरी तरह से? ओके, ठीक. Noted? Everyone? Yes, sir. राइट. थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा क्वेश्चन पे. x minus 6 का मॉड प्लस x minus 10 का मॉड इज इक्वल टू 20. Solve for x. Fast.
Done, sir. Very good. See, again, start with number 6, number 10, first, second, third. Case first, x greater than equal to 10. This will be x minus 10, x minus 6, 2x minus 16 is equal to 20, 2x is equal to 36, x is equal to 18. x greater than equal to 10 को मे भी हो सकता है कभी x की वैल्यू आ जाए 5 और x greater than equal to 10 है तो वो आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट. सेकंड, when x lies between 6 to 10, 6 to 10, x minus 6, 10 minus x is equal to 20, x cancelling out, this coming 4 is equal to 20, not possible, no answer. Third case, x less than 6, 6 minus x plus 10 minus x is equal to 20. So 6, 2x is equals to minus 4, x is equal to minus 2, right? So x is coming as minus 2. One number is coming as minus 2 and other we are getting as 18. Minus 2 and 18. कितने लोगों का सही है? राइट डाउन. यस ओनली. धर्मिल का सही है, आदित्य का सही है, जेबल का सही है, चिन्मय वेरी गुड, उदय वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, रितेन वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड, वेरी गुड. किसी को कंफ्यूजन बच गया हो, एक बेसिक अगर यहाँ तक क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ा सकूं क्वेश्चन को. इफ एवरीवन इज गेटिंग दिस, right? So 2 times mod of x minus 1 plus 3 times mod of x minus 6 is equal to 10. Solve. Take your time. थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश है, देखिए आप कैसे डील करते हो.
Okay, let's start. Very good, very good, very good. देखना, आंसर्स दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो दो सभी को चेक करने के बाद टेक योर टाइम। ओके, चल स्टार्ट करूं। सबके अटेम्प्ट हो गए हैं? ओके एवरीवन, सी नंबर लाइन 1 and 6 is first x greater than equal to 6 पर ये आ जाएगा 2x minus 2 plus 3x minus 18 is equal to 10, 5x 20 30 x is equal to 6, greater than equal to 6 था तो 6 को सेटिस्फाई किया, राइट? फर्स्ट। सेकंड, x lies between 1 to 6, right? 2x minus 2 plus 6 into 3 minus 3x is equal to 10. This is coming as 18 minus 2, 16, and 6 is equals to x. X is equal to 6. Obviously, x not equal to 6 है, तो यहाँ x is equal to 6 मेरा solution नहीं होगा, ऑलरेडी पहले हो भी चुका है। थर्ड, x less than 1, 2 minus 2x plus 18 minus 3x is equal to 10, 5x is equals to 20 minus 10, right? X is equal to 2. तो सही आ रहा है ना? x is equal to 2, तो क्या x is equal to 2 मेरे सॉल्यूशन में होगा या नहीं होगा? No, sir. Why not? Why X not? is less than 1. Very good. So we have like only one solution. इसको बोलते हैं extraneous root. Extraneous root, right? मतलब कितने भी वो घुमा फिरा के दे, if you know the basic concepts, so you will be able to crack the question, right? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एवरीवन। कितने लोगों का सही रहा पहले वो तो बता दो यार, तो मेरे को थोड़ा आसान पड़ेगा। यस, राइट डाउन यस, जितने लोगों का सही रहा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। यार दो दो बार मत लिखा कर भैया। कितने लोगों का गलत हुआ वो भी लिख दें, नोट करके लिख दें। नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं। यानी वांट टू आस्क एनीथिंग? कहाँ पर दिक्कत हुई ये बताओ। शुभम, वांट टू आस्क? ठीक है ना, कि जितने डोमेन में है वही सॉल्यूशन होंगे, उसके बाहर आ रहे हैं तो वी डोंट हैव दैट ना, एक्सट्रीनियस रूट को हम लोग वहां पर नहीं लेते। ठीक ठीक चलेगा, वो दो चार क्वेश्चन में अपने आप वो दिखने लगते हैं। नो, नॉट अ बिग डील।
2 mod of solve for x. Good fast. Very good. Very good. वेरी गुड. चलो देखते हैं. फिर डिवीजन करा. पहले ये 2 है, ये 6 है. केस फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6. मैं डायरेक्टली लिखने का कोशिश कर रहा हूँ इसे.
2x minus 12 plus 5x minus 10 is equal to 20. 7x is equal to 30 to 42. X is equal to 6. Again, you are getting a good point. Is 2 when x lies between 2 to 6. So obviously, you are getting this as 2x minus 12 plus 10 minus 5x is equal to 20. Minus 3x minus 2 is equal to 20, or 3x is equal to minus of some 22. So negative values, but x is positive, so not possible. Third, x less than 2. Careful रहना इसमें ना. Both the numbers 6 and 2, right? 2 is negative, so 10 minus 5x plus 2x minus 12 is equal to 20. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, राइट. एंड एक मैंने अभी जो लिखा था इस पे क्या था, तो का जो आंसर आ रहा है उस पे दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो 12 माइनस 2x, काफी लोगों का आंसर इस तरीके से आया जो गड़बड़ है. बात समझ गए होगे, क्योंकि नेगेटिव होना है x माइनस 6 को, पॉजिटिव होना है x माइनस 2 को 2 to 6 के लिए. 2 plus 3x is equal to 20, 3x is equal to 18, x is equal to 6, जो कि ऑलरेडी हो चुका था. x less than 2 पर 12 minus 2x plus 10 minus 5x is equal to 20. 7x is equals to minus plus 2. x is equal to 2 by 7. x less than के लिए this is satisfying. कितने लोगों का सही है वो जल्दी से लिख दो. यस, अच्छा, काफी लोगों का तो आंसर है ही. गो फॉर बोथ द आंसर्स. एक आंसर हमेशा गलत होगा. प्रिटेन वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, प्रतिनव वेरी गुड, उदय वेरी गुड, तनिष पूछना चाहोगे कुछ? यानी वेरी गुड, आर्या गुड, तनिष यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, ठीक ठीक है. x minus 1, x minus 3, x minus 5 is equal to 10. Solve for x. इस बार मैंने 3 मॉड कर दिए 2 की जगह पर, एंड सीधा आपको दे दिया क्वेश्चन. ट्राई दिस.
Very good, very good. Almost everyone getting this. Do it fast, do it fast. One, 3, 5 for this, right? X greater than equal to 5. 3x, x, 3x, 5, 3, 8, 1, 9 is equal to 19. X is equal to 19 by 3, 6 point something आ रहा है, तो एक तो आंसर ये गया. 3 to 5. 3 to 5, this is, ये दोनों को मिलाया पॉजिटिव जाएंगे क्योंकि ये दोनों रेड से लिख रहा हूँ. 2x minus 4 minus x plus 5 is equal to 10. X is equal to 9.
right? Not possible. Next, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 में x minus 1 minus of 2x minus 8 is equal to 10, minus x plus 7 is equal to 10, x is equal to minus 3, right? And the fourth one, x less than 1. So this will be 9 minus 3x is equal to 10, 3x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by 3. This is satisfying, this is not satisfying, this is not satisfying. X is equal to minus 1 by 3, x is equal to 19 by 3. Minus 1 by 3, 19 by 3, two discrete values are the solution. बहुत सारे लोगों का आंसर आया है. x is equal to 3 भी किसी ने लिखा है? व्याप्ति क्लियर ना? वो भी चेक करने हैं x की कौन सी वैल्यूज में वो वर्क कर रहा है. x लाइज बिटवीन x की वैल्यू, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 1 2 3 और आंसर ला रहा हूँ -3. रॉन्ग ना? यहाँ x की वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ 3 to 5 है एंड आंसर ला रहा हूँ 9. रॉन्ग ना? ये सब आंसर में तो मेरे इंक्लूड ही नहीं होंगे. इंक्लूड में होंगे जब x की वैल्यूज और जो मैं ला रहा हूँ जिस इंटरवल में है वो दोनों मेरा मार्केबल हो, मार्क कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो. इज इट ओके? यस सर. कोई और कुछ पूछना चाहेगा इसमें? ऑलमोस्ट सबका सही है, बट फिर भी अगर कोई पूछना चाहे प्लीज आस्क. राइट, एक और क्वेश्चन. x minus 2, x minus 4, x minus 6 मॉड में है सर, इज इक्वल टू 5. ध्यान से. Very good.
और चेक करें 2 4 6 2 4 6 x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की बात कर रहा हूं जब 1 2 3 3x 6 4 2 12 is equal to 17 x is equal to 17 by 3 5 पॉइंट समथिंग आएगा x ग्रेटर देन 6 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हटा दिया फर्स्ट। सेकंड x लाइंग बिटवीन 4 to 6 ये दोनों प्लस में होंगे तो ये आएगा 2x minus 6 plus 6 minus x is equal to 5 6 कैंसिल आउट x is equal to 5 4 to 6 के बीच में सेटिस्फाई करेगा। सिमेट्रिसिटी से भी देखते तो x is equal to 2 to 4 ये पॉजिटिव होगा and rest these two will be negative to 10 minus 2x is equal to 5 right so x is equals to 8 minus 5 is equal to 3 fourth ठीक है fourth x less than 2 this will be 12 minus 3x is equals to 5 x is equal to 7 by 3 7 by 3 is the value 2 point something so this is again not satisfying मेरे को ये दो वैल्यूज है जो सेटिस्फाई की 3 and 5 देखता हूँ चैट में काफी लोगों के कुछ हैं 3 5 के साथ में 7 by 3 and 22 by 3 भी है आई गेस सबको क्या गड़बड़ हुई ये पता चल गया हो आई गेस Yes, sir. एक और क्वेश्चन आए मेरे को लगता है हमें करना पड़ेगा क्योंकि मैं जितना चाह रहा था उतने लोगों का सही आया नहीं है एंड केयरफुल केयरफुल इतनी बड़ी बात नहीं है x minus 1 right 2 times x minus 1 का mod plus 3 times x minus 2 का mod plus x minus 3 का mod is equal to 8 solve for x do it fast
Very good. तरमिल चेक करो बेटा एक बार। आई गेस जितने लोगों ने भेजा है सब कुछ सही लग रहे हैं, थोड़ा सा चेक कर लो और जनाब चेक करो एक बार। डोमेन चेक करो, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू उसको चेक करो कहाँ पर सेटिस्फाई करेगा और नहीं करेगा। जो हमारा आंसर आ रहा है क्या उस इंटरवल पे वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। चल मैं करता हूँ। तो स्टार्ट with 1, 2, 3 greater than 3. So this will be 3 to 5 plus 1 6x minus 2 6 8 minus 11 is equal to 9. So 6x is equal to 19. 19 by 6. एक आंसर तो ये गया। Second line between 2 to 3, ये नेगेटिव पे जाएगा। 19 by 6 जो जा रहा है पहले वो चेक कर लो कि ग्रेटर देन 3 है, यानी कि ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर। 2 to 3 में दिस इज नेगेटिव और ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो 2x plus 3x 5x minus 2 minus 6 11 plus 3 minus x is equal to 8, right? This is 4x minus 8 is equal to 8. 4x is equal to 16, x is equal to 4. When x lies between 2 to 3, बेचारा नंबर आ गया 4, तो आ तो गया ठीक but not satisfying. Third case, when x lies between 1 to 2, right? This will be positive, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। 2x minus 2 plus 6x minus 3x plus 3 minus x is equal to 8, right? 2x once again, all right, this when x is lying between 1 to 2, so this will be positive, both this will be negative, right? So this is positive, so this will be 2x minus 2 plus 6 and this is 9. 9 minus 4x is equal to 8. 2x minus 2x plus 7 is equal to 8. 2x is equals to minus 1, x is equals to minus half. And this value is not lying between 1 to 2. इसे भी भूल जाओ. Fourth case, when we are saying x less than 1. So for x less than 1, everything is coming as negative. So 2, 6, 3. 11 minus 3 to 5, 1, 6x is equal to 8. And 6x is equal to 3. X is equal to half, and this satisfying x less than 1. So two values are satisfying, one is half and second is 19 by 6. ये तो मजेदार बनता है यार, देखना। Case 2,
थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ये वाले केस में। दिस इज 5x, ये दोनों थे नंबर, यहाँ 2 नहीं 1 है, तो दिस इज 6 + 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, बट फिर भी 13/4, 4 3 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अगेन नॉट द आंसर। थोड़ा सा और आगे करोगे तो पता चलेगा कि ये शुरुआत में ही आप क्वेश्चन जब करने के लिए स्टार्ट करते हो उसी समय आपको नजर आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर सॉल्यूशन मिले और कहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिले। इज इट ओके एवरीवन? 13/4 में सोल्यूशन मिलेगा ना, क्योंकि वो तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो 2 से ग्रेटर है, तो मिलना चाहिए ना और 13/4 में भी। सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ के बीच में खोज रहे हो? वो 3 से भी ग्रेटर हो गया ना, 3 से भी ग्रेटर हो गया, वो 3 से भी ग्रेटर हो। ऑब्वियसली आप तो सॉल्यूशन खोज रहे हो 2 से 3 के बीच में ना बेटा, जी जी से समझ गया। ना 3 से भी ग्रेटर जा रहा है ना। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे रख रहा हूँ, बट मैं होप करता हूँ कि नो गड़बड़ दिस टाइम ना। x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 = 12. Solve for it. Very good, very good, very good.
वेरी गुड आदित्य। पूरे आंसर निकालो, पूरे आंसर्स निकालो, देखो कितने आंसर्स आ रहे हैं और उसे चेक करो कि वो जो इंटरवल आप ले रहे हो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। राइट, दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि उसको सभी को दिखाया जाए क्या क्या रिजल्ट है किसका किसका। तो पीटीएम में आप लोगों को अपने अपने मार्क्स बता दिए जाएंगे। रिजल्ट तो आपने जैसे एग्जाम दिया था वैसे ही आ गया था। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि कौन टॉप करे, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये सब चीज़ें अभी हो। अभी मैं चाहता हूँ बस अभी इंजॉय करो, समझो, बाद में सबकी रैंकिंग तो अपने आप होती ही जाएगी। ऑनलाइन में यही तो सबसे बड़ा फायदा है, आपने जैसे एग्जाम दिया वैसे ही पता चल जाता है कितने मार्क्स है आपके। सैटरडे संडे आप लोगों का पीटीएम है। तो जूम पे ही होगा। घर आएंगे तेरा। शुरू करूं मैं, स्टार्ट। x ग्रेटर देन 4 पर क्या आएगा, देखना ध्यान से ना। 1 2 3 4, 4x माइनस 4 7 9 10 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 22/4 या 11/2, जो x ग्रेटर देन 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट तो ये हो। सेकंड मेरा आंसर आएगा नहीं, वैसे चलो सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव होगा, इस बार मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। पहले चाहता हूं आप लोग सॉल्व करें, आप देखें, उसके बाद मैं करूंगा। राइट, मैं चाहता हूं कि इस बार आप जो भी सोचते हो इसे सॉल्व करने के लिए, नया आइडिया है, नई चीज है, पहले एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करें, क्या सोच रहे हैं डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली
सोचना हमारे लिए आसान होगा, या आपने क्या सोचा वो क्या बेस्ट तरीका है। हाँ, मैक्सिमम 3 मिनट्स। वेरी गुड प्रिटेन, वेरी गुड। सी केवल फंडामेंटली आपको एक चीज को ख्याल रखना है जब इस तरह के मॉड के क्वेश्चन कर रहे हो। कुछ चीजें ख्याल रखो। फर्स्ट, मॉड x इक्वल टू 2 है। x मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूँ, जो भी हो मॉड के अंदर 4 बार मॉड या जो भी हो, तो पहली बार जब भी ओपन करोगे, मॉड को ओपन करोगे, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 2 हो जाएगी। सेकंड, मॉड x इक्वल टू 0 है तो x केवल 0 के इक्वल होगा। थर्ड, मॉड x इक्वल टू -2 है तो x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, राइट।
केवल ये 3 चीजें हैं जो आपको ख्याल रखनी है मॉड के किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए, राइट। तो यहाँ जैसे मैंने वर्क किया, x minus 2 का mod minus 3 is equal to 5, x minus 2 का mod minus 3 is equal to minus 1. From first we are getting x minus 2 का mod is equal to 8, x minus 2 का mod is equal to minus 2, right? This is the first one, this is the second one. From first x minus 2 का mod is equal to 8 to x minus 2 is equal to 8 और x minus 2 is equal to minus 6. यहाँ से ये आ गया x की वैल्यू आ गई 10 और ये आ गया minus 6, राइट। सेकंड में कोई सॉल्यूशन नहीं देगा क्योंकि x minus 2 का mod is equal to minus 2 तो पॉसिबल होता ही नहीं है। minus 6 and 10. Yes, Dharmil, want to ask anything? सर मैंने अलग मेथड किया। क्या मेथड किया बेटा? सर दोनों साइड पॉजिटिव था ना, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो उसके वजह से जो बाहर का मॉड है वो निकल जाता है और x माइनस 2 द होल स्क्वायर जो आएगा ना वो भी Very मॉड good. हल निकल जाएगा, तो एक ही मॉड रहेगा। वेरी गुड। फिर तो- दूसरी बार भी जब आ जाएगा फिर उसे स्क्वायर कर देना। यस सर, 2xy हाँ? होगा या फिर उसमें दो केसेस भी निकाल सकता है। चलेगा, ये एक बेसिक तरीका है। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मॉड हटाने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप स्क्वायर कर दो। और कोई रिटेन जीरो कैसे लाया? सर मैंने मॉड ओपन कर दिया तो फिर एक बार x माइनस 2 माइनस 3 5 के बराबर होगा और x माइनस 2 का मॉड माइनस 3 माइनस 5 के बराबर होगा। तो फिर सर फिर दोनों को सॉल्व किया तो सर एक केस आता है x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 आया तो वो माइनस नहीं बेटा, ये तो अभी तो यहाँ पर देखा ना तुमने कि अगर नेगेटिव है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। अगर ये नेगेटिव है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मॉड समथिंग नेगेटिव, नो सॉल्यूशन। लेकिन सर x माइनस 2 का मॉड था ना। हाँ, किसी का भी मॉड रहे, मॉड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ पॉजिटिव क्वांटिटी सर। को आप नेगेटिव से तो इक्वेट कर ही नहीं सकते हो ना। हाँ सर जीरो नहीं होगा। व्याप्ति, ओके। आदित्य, समझ में आई ये सर। बात? हाँ समझ सर। में आई? हाँ, नेक्स्ट। x माइनस 1 का मॉड माइनस 3 का मॉड माइनस 4 का मॉड इज इक्वल्स टू 7। डू इट। वेरी गुड गाय।
वेरी गुड प्रिटेन। चलो मैं स्टार्ट करूं। आई गेस सबने अपने पे टाइम ले लिया। सर 1 मिनट। जेबल एक बार चेक करो। वेरी गुड। और देखें, चल स्टार्ट। एक बार 7 होगा, -7, 4 को इधर लाया, 4 को इधर लाया। ये -3 है तो इससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। x -1 -3 का मॉड इज इक्वल टू 11। फिर x -1 का मॉड -3 इज इक्वल टू 11 एंड -11। 3 को इधर लाया, 3 को इधर लाया, इससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। ये गया 14। x -1 का मॉड इज इक्वल टू 14, x -1 इज इक्वल टू 14, x -1 इज इक्वल टू -14 is coming as -13 and 15. Is it okay? Is it okay? सर वो 3 वाले के बाद वापस बता देना। क्या, कौन सा बेटा? सर वो x mod of x -1 -3 का mod is equal to 11, उसमें आपने उधर से ये मतलब। आया तो एक बार +11 होगा, एक बार -11 होगा। यस सर। +11 में 3 ट्रांसफर किया तो 14 होगा, -11 में 3 ट्रांसफर किया तो -8 होगा। और जी, मॉड x -1 -8 तो नहीं पॉसिबल ना। जी जी। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस, तभी मैं डिसाइड करूंगा इसका क्वेश्चन दूं या आगे बढ़ूं। एक ख्याल से सभी का सही नहीं हुआ है, पर फिर भी एक बार मैं काउंट कर लूं कितने लोगों का सही है। ओके तनिष, क्या दिक्कत हुई? Want to ask? Anyone wants to ask? किसी को भी लग रहा हो कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है या दिक्कत हो रही है, केवल 3 बातें आपको ख्याल पे रखनी है जो मैंने पहले भी यहाँ कहा। राइट, नेगेटिव में मॉड समथिंग इज इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। मॉड समथिंग इज इक्वल टू 0 आया तो एक ही वैल्यू हो रहा है। मॉड समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव आया, ±2 में ओपन अप होना। एक क्वेश्चन और चलेगा अब तो।
केयरफुल, इस बार क्वेश्चन को अच्छा चेंज देगी, तो बाद में आप लोगों को पता चलेगा क्या चेंज मैं कर डालता हूँ। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अच्छा चेंज है केयरफुल। Uday, very good. Shubham, very good. Chinmay, very good. Susan, very good. Gabriel, very good. चले शुरू करो, सबका हुआ इसमें भी। धर्मिल, ओनली वन वैल्यू, दो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 3 मिनट आप सबके पास और है, टेक योर टाइम, अपना चेक कर ले, अगर हो भी गया है तब देन आई देन वी कैन गो।
Okay, start, right? Okay, that means take the function x minus 1 का mod minus 6 का mod minus 2 is equal to 5 and minus 1. इधर से ले गया तो प्लस 2, इधर से ले गया तो माइनस 3 से तो नहीं होगा. x minus 1 का mod minus 6 is equal to 7. x minus 1 का mod minus 6 is equal to 7 and minus 7. x minus 1 का mod 13, x minus 1 का mod is equal to minus 1. फिर ये चला गया. x minus 1 is equal to 13, x minus 1 is equal to minus 14 and minus 12. I guess ये दो आंसर्स आएंगे. इससे फिर से आंसर मिलेगा. Is it okay? छोटा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में. एवरीवन केयरफुल. ठीक है, डू इट. इसमें मजा आए, बट केयरफुल ना. वेरी गुड. ध्यान देना, आंसर इस बार कुछ अधिक भी हो सकते हैं. केयरफुल. वेरी गुड. अच्छा, वेरी गुड. सुबह में एक बार चेक कर ले बेटा. प्रतिना एक बार चेक कर लो.
उदय एक बार चेक कर लेना, धर्मिल चेक इट आउट अगेन। सर इसमें इसकी वैल्यूज और भी पॉसिबल है क्या? हाँ बेटा, और होना चाहिए, चेक करो। अच्छा लेट्स स्टार्ट। सी, पहले बाहर के मॉड को मैंने हटाया, राइट। x माइनस 1 का मॉड, माइनस 6 का मॉड, minus 3 is equal to plus 2 and minus 2. 3 will be there only, 5 and 1, right? X minus 1 का mod minus 6 is equal to 5, minus 5, 1, minus 6 में लाया, right? अब यहाँ से x minus 1 का mod is equal to 11, 1, 7, 5, right? अब यहाँ से फिर एक और मुझे जाना है, x माइनस 1 की वैल्यू प्लस और माइनस 11, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 7, प्लस और माइनस 5, 8 वैल्यूज मेरे पास आ रहे। कौन कौन से? यहाँ से मैंने कहा था एक तो 12 आ गया, माइनस 11 प्लस 1 दिस इज माइनस 10 आ गया, माइनस 11 पर 0 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 8, माइनस 7 माइनस 1 पर हो गया 6, ये हो गया 6, 5 प्लस 1 6, माइनस 5 माइनस 1 पर हो गया माइनस 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज आए। देखें इसका किसका है, परफेक्ट 8 वैल्यूज। रुतेन, उदय, जेविल, वेरी गुड, तनिस, चिन्मय, आदित्य, थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर कर गया, बट गुड गुड गुड, धर्मिल गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आज मॉड के बारे में इक्वलिटी के साथ में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना
हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे अब इसका ग्राफ, राइट, एंड सेकंड पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। ये दो चीजें हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसके देखने हैं। बट यहाँ तक को थोड़े से ढंग से अच्छे से कॉपी में जितने क्वेश्चन है फिर से उसे प्रैक्टिस कर लें। नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से यू कैन गो थ्रू दिस। आप इसका कोई असाइनमेंट भेजोगे?